उन दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धा समझाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। एक तो तुम्हारे हाथ से सेवा होनी चाहिए। सेवा, जब सेवा नहीं होगी इस रास्ते पर तुम नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है। तुम्हारे गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में तुम गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनको चरणों में चरण देखते हो। जो चरणों में चरण देखेगा वो चैतन्य नहीं बन सकता। उनकी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे मन में रह नहीं सको तुम, तब चैतन्य अवस्था आती है। तुम ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि मैं आज हफ्ता भर हो गया, गुरु से मिला ही नहीं। गुरु के मुंह में इतनी तड़प होनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं आया, उस शिष्य का हुआ क्या, आना चाहिए था। ऐसी स्टेज परस्पर बननी चाहिए, वो चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो, कभी देवी चालीसा का पाठ करने लग जाते हो, कभी सरस्वती चालीसा का पाठ करने जाते हो। तुम चालीसा का पाठ करने से कुछ होगा नहीं। तुम जिंदगी भर उसमें घी तेल डालते रहो, लक्ष्मी की आरती करते, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादे भी करते रहे, तुम भी करते रहो। लक्ष्मी मैया तेरे बाप दादे के पास भी नहीं आई, तुम्हारे पास भी नहीं आई नहीं। और घी जला दिया कम से कम 25 किलो पूरी जिंदगी में। दादाजी ने जला दिया, फिर पिताजी ने जला दिया, तुम भी जलाओगे। घी जलाने से, आरती करने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता है। वो रास्ता चैतन्यता का रास्ता। चैतन्य बने, मुर्दा बनकर के जिलेगा नहीं। ये जो तुम्हारा जीवन है मुर्दा जीवन है। उस छोटे से घेरे में आबद्ध हो। उस छोटे से घेरे में तुम्हारी पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक तुम खुद हो, एक पोते पोती और 20-25 कागज के नोट है थोड़े, बस खत्म। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस छोटे से घेरे से बड़े घेरे में आइए। ये साधना का रास्ता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले सेवा भावना होगी, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को 5 रुपए बोल लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या के लिए खोलेंगे? जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, हनुमान जी का मंदिर था, उसे 1 किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था, श्री राम और सीता और लक्ष्मण। ये व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजन नारायण भय दारुण कंज लोचन कंजम कर पद गंजारुण में स्तुति किया। और उसने साथ की भगवान राम खुश हुए। उसके सब अच्छे बोल कैसे आया? उनकी मेरी पत्नी खो गई है। उनका देख भाई, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये 1 मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं। मेरी खुद की पत्नी खो गई थी, तो मैं तो ढूंढ नहीं सकी। तो हनुमान जी तुम आ जा, तो डिपार्टमेंट बंटे हुए। अब तुम नौकंज लोच निकल राम जी के पास कर दो, राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई हुई कहां चलाएंगे राम जी बेचारे, वो नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते भाई तुम बेकार है, 1 घंटे मेरे आरती हो कुछ फायदा नहीं। मैं खुद भी नहीं बेचा, 13 साल भटकता रहा, मैं तो कुछ नहीं। वहां जा, वो काम करेंगे। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी मेरी कुछ करो। बोलो भैया मैं खुद कुंवार हूं, पितर हूं, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से लाके दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया था। हमने क्या किया, देवताओं को अलग अलग बांट लिया है। ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे और आज और सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए तुम्हारी, कोई स्वार्थ नहीं हो, मगर सेवा होनी चाहिए तुम्हारी। और सेवा के साथ त्याग होना चाहिए। त्याग वह जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, त्याग उसको कहते हैं। तुम्हारे पास 5 किलो मिठाई और 1 गुलाब जामुन रख दिया, वो त्याग नहीं है। तुम्हारे केवल 1 रोटी और 1 रोटी का आधा रोटी तुम दान दे दो, वो त्याग कहलाएगा। तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, उसमें से 500 रुपए दे दोगे तो वो त्याग कहलाएगा। मगर त्याग ऐसी स्थिति पे होना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। तुम मुझे अगर त्याग करके और 100 रुपए ला करके और एक कुर्ता पहना दोगे तो त्याग तुम्हारा नहीं, यूजलेस है वो। मेरे आगे ही कुर्ते 40-50 पड़े, 200 पड़े, तुम्हारा उस कुर्ता मेरे काम नहीं आएगा। तो मुझे और मैं मतलब तुम मुझे मिठाई ला के खिला, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, और तुम मिठाई का डब्बा ला के, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी अपेक्षा कोई संस्था का काम हो, जैसे संस्था में, और ये लोग आज जिसने भी हॉल बनाया, मैंने तो मैं पैसे देके खरीदा, पर जिसने भी ये बनाया होगा उसको भी ये पुण्य मिल रहा होगा जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो। चाहे उसका 100वां हिस्सा मिलता हो, चाहे 1000वां हिस्सा मिलता हो, मगर यहाँ एक अच्छा कार्य, अगर मैं नहीं होता खुद दूसरा शराब पार्टी खोलता,
यहाँ पर टेबल लगा देता है, शराब विस्की की बोतल होती है, पीते, नाच गाने होते, ऊपर को देखता नहीं तो नाच गाने होते, वैसा भी हो सकता था। मगर शायद उनके कोई पुण्य अच्छे होंगे पूर्व जन्म के कि यहाँ मंत्र साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, अच्छे मंत्र हो रहे हैं, गंदा काम नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर तुम एक वायरिंग लगा देते एक कोई वायर, तो वो तुम्हारा त्याग है, क्योंकि इससे जो और साधना करने वाले उनको एक लट्टू और काम आएगा। मेरे 500 रुपए का कपड़ा पहनने की अपेक्षा 1.25 रुपए का लट्टू लगाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। त्याग का मतलब वह होता है, सेवा का मतलब वह होता है आप खुद वो लगाएं कि यहाँ एक बोर्ड अच्छा नहीं है, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। चाहे ये हो, चाहे संतोषी माता का मंदिर हो, चाहे जगदम्बा का माता का मंदिर हो, कहीं पर भी जहाँ त्याग की प्रवृत्ति होती है वहां त्याग भावना तुम्हारी होनी चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां तुम्हें करनी चाहिए। सेवा, सेवा के बाद त्याग, त्याग के बाद समर्पण। जहां तुम्हारा समर्पण की भावना है, समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ हैं अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा मैं, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आपके चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए। तो अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा कि तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं। फिर तुम समर्पण भी करो और एक कुर्ते का करोड़ का झटको और मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ है मेरे घर में पड़ा है। यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। ये समर्पण। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। शुरू में शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के 3 बिंदु उसके जीवन में आते हैं, 3 बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं है। Your problems and the solutions to them constitutes one path. The spiritual elevation of life is another path. The second path is more significant as it is the way to activation of Kundalini, the way to Sahasrar, the way to realization of God, the way to establish the Guru in yourself, the way to salvation, and the way to Siddhashram. Along with moving on the first path, you should also strive to progress on this second path. And there are 3 conditions for moving forward on this path. Firstly, you should offer your selfless services to the Guru. If you do not serve him, you cannot progress on this path. Selfless service is the basis to spiritual enlightenment. You people are not serving the Guru. You can't experience the divinity of river Ganga in his holy feet. You look at his feet as merely his feet, and hence you cannot become enlightened. State of enlightenment means that on seeing him, your eyes fill up with tears of joy. It means that you cannot remain without seeing him even for one day. You should reach a state that if you are not able to meet him for over a week, you become so much impatient that you lose all interest in your work and always keep planning how to meet him. And such a bond should develop that the Guru too becomes restless when you do not meet him for so long. This is the state of an awakened conscience. But all you do is the recitation of Hanuman Chalisa. What can be achieved by just mechanically reading the Chalisa? You may spend all your life offering oblations in the holy fire.
You may sing hymns in praise of Lakshmi. Your ancestors did this, and so can you. But Lakshmi never appeared before your father or forefathers, and she won't appear even before you. Your ancestors have merely burnt butter in the fire, and you too are doing the same. Lakshmi won't appear by burning incense or singing hymns. There is a different way to make her appear, and that way is the path of divine knowledge. You should become enlightened and should no longer remain lifeless. You are like a living corpse, and you are imprisoned in a small house along with your wife, your mother, sons, grandsons, and some money. You do not possess anything else. Leave that small enclosure and enter into this vast expanse of spirituality. This is the path of sadhana, where first you shall have to develop a spirit of serving others. If you offer 5 rupees to Lord Hanuman with the hope that he would help you win a lottery, then your whole thinking process is wrong. Why wouldn't Hanuman win a lottery for himself instead of helping you win? There was once a temple of Lord Hanuman, and 1 mile away from it there was a temple of Lord Rama. A person went to the temple of Rama and started praying to Lord Rama. After performing worship, he offered sweets to the deity. Lord Rama was pleased. He appeared before him and said, "Well, son, why are you here?" The man replied, "My wife is missing. Please help me." At this, Rama said, "This is not my work. 1 mile from here is Lord Hanuman's temple, who looks after this department. When my wife was missing, I too sought his help, and he found her. Hence, you go to him. Here the departments have actually been divided. If you go and tell Lord Rama that your wife is missing, he won't be able to help you. You shall have to go to Lord Hanuman. Rama will only say, 'I myself could not find my wife. Go to Hanuman, he shall help you.' And if you go to Hanuman and say that you are not able to get married, he will say, 'I am myself unmarried. I could not find a girl for myself. Then where shall I find one for you?' What we have done is that we have divided the work among all the gods. Each god has his own work. Hence nothing can be achieved if you offer 5 rupees to them and pray to them with folded hands. You shall have to perform sadhana and make the gods appear before you. Offering service means selfless services. You should not have any selfish motive, and along with selfless service, there should be a feeling of sacrifice for the good of others. Sacrifice of something which is most liked by you. If you have 5 kgs of sweets and you give 1 piece to someone, then this is not sacrifice. But if you have 1 loaf of bread and you give half of it to someone, then this shall be true sacrifice. But sacrifice must be made only for the good of others, or where it has some significance. If you buy a shirt for 100 rupees and offer it to me, then this is no sacrifice. This act is useless, for I already have 40 to 50 shirts and I don't need any more. If you bring sweets for me, then they too shall go waste, for I do not eat sweets. I don't expect such material things from you. On the other hand, it would be more useful if you contribute your efforts in the progress of the work of the trust. I have bought a land, and if someone builds a hall on it for the benefit of the sadhaks and the general public, then he shall surely obtain the results of his good deed. It does not matter how much the benefits of the results are, but what matters is that he has contributed to a good cause.
If I had not planned to make the ashram, someone might have set up a bar there and people would have consumed liquor at that very place. This could have happened, but now only holy ceremonies, sadhanas, shall be performed there. And if you contribute in such work, then this shall be your sacrifice. Your help shall prove to be beneficial to thousands of people and more useful than if you offer gifts and sweets to me. Service means that through which the common man can benefit. This place needs a good signboard. I am not asking you to get one painted. I want to tell you that any work which has some general utility is a good service. You may be in any temple or in any place. Wherever sacrifice and services are required, you should move forward to help. Service, sacrifice and devotion are the three steps to spiritual enlightenment. Devotion means dedicating everything you possess, giving up all you have, and becoming one before whom or before what you devote yourself. When devotion is complete, you shall obtain everything. Thus you have to first empty out everything if you want to acquire the spiritual treasure. When the jug is empty, it can be filled again to its brim with one liquid. If your mind, your thoughts are already full, then I cannot write anything new on it, and my whole discourse shall go in vain. Only when you bring a plain, empty sheet of paper shall you be able to read the lines which I shall inscribe on it. If already it is filled with lies, deceit, immorality, then what can I write on it? Where shall I write? You say to your Guru, I have given up all I possess to you and am now empty. I am sitting in your feet and it is up to you to give whatever shape or form to my life according to your wish. Till now I have lived life as I wished. Now you teach me how to live. You tell me what to do and how to do. I shall do whatever you ask me to. This is devotion. When you become devoted, then your position, your fame, all become insignificant. Then even if you are a millionaire, it would have no significance. Devotion means that you are nothing. It won't do if you say that you are devoted and then feel proud that you are an officer or you are such a great scholar. This is not devotion. Devotion means you are nothing at all, that you are empty, that you have no position, no fame, no money, no power, no wealth and nothing. Whatever you do have in material terms is at your home. Here in the feet of the Guru, you are fully devoted. And when a person reaches this stage, he becomes a true disciple. He is not a disciple from the beginning. First, he is just a curious person, then he becomes enlightened, and after adopting the three principles, service, sacrifice and devotion, he becomes a disciple. Disciple in Sanskrit is Shishya and it means to come closer. The disciple always comes closer to the Guru. This does not mean that he should go and embrace the Guru. This is not what I mean by coming closer.